हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हाशीमोटोस थायराइडाइटिस के बारे में, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिर्फ थायराइड ग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। अगर आप थायराइड मेडिसिन ले रहे हो लेकिन आपको फिर भी सिम्टम्स है जैसे कि फटीग, वेट गेन, हेयर फॉल, ब्रेन फॉग, मूड इश्यूज एंड वीकनेस, ये सारी चीजें अगर हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए, यू आर नॉट फीलिंग गुड इन स्पाइट ऑफ द मेडिकेशंस, ऑलराइट, सो देन दिस वीडियो इज फॉर यू. So, just to introduce myself, I am Dr. Prashant. I am a pediatric surgeon practicing in Pune and also health and wellness coach since the last 10 years. और हम लोगों को हेल्प करते हैं वेट लॉस, डायबिटीज रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, पीसीओएस रिवर्सल एंड सो ऑन. एंड यस, please subscribe to the channel and do share these videos with your friends and family because we want to spread this word of healthy lifestyle. Okay, identifying the root cause. Okay, because आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर रूट कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो रूट से निकल जाएगा. Okay, and we can feel absolutely fantastic. Okay, so with this, let's dive into today's topic. Okay, सबसे पहले what is Hashimoto's thyroiditis? Okay, this is a very common condition. It is like 1 in 5 females almost have it. It runs in families also. So ये ऐसी डिसीज है जिसमें एक्चुअली हमारी इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, ये हमारी खुद की थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर रही है. ओके, नाउ this is very unfortunate that our own body is actually attacking our own organs. Okay, इसमें बेसिकली बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है जिसको बोलते हैं एंटी टीपीओ, थायराइड पेरोक्सिडेस, एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज जो रहते हैं, जो धीरे धीरे हमारे थायराइड को अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं, एंड इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ओके इन द थायराइड ग्लैंड. इसीलिए हाशीमोटोस जो है ये सिर्फ लो थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली एक इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है. इट्स अ इम्बैलेंस इन द इम्यून सिस्टम वेयर इन द इम्यून सिस्टम हैज गॉन हेवायर एंड अटैकिंग आवर थायराइड. एंड व्हाई डज दिस हैपन? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. इसका रूट कॉज अगर हम लोगों को पता नहीं है तो ट्रीटमेंट जो है ये बहुत सुपरफिशियल हो सकता है. सो ये एक दिन में नहीं होता. ओके, इसके बहुत सारे मेजर रीजन्स है, उसमें से 4 मेजर रीजन्स है जिनके वजह से ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को होती है. सबसे पहले जेनेटिक टेंडेंसी. आपने देखा होगा कि फैमिली में ये रन करता है, सो जिसमें थायराइड के प्रॉब्लम से या फिर कुछ और ऑटोइम्यून डिसीजेस है तो उसमें जो नेक्स्ट प्रोजेनी है तो उनको भी होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली इफ शी इज अ फीमेल. ऑलराइट, तो जेनेटिक इज वन ऑफ द थिंग. सेकंड इज गट हेल्थ इश्यूज, बिग वन. हमारी इम्यूनिटी जो है ये 70% गट में होती है. सो अगर हमको कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जैसे लीकी गट, पुअर डाइजेशन, फूड सेंसिटिविटीज, ये सब हमारी इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, and that is how we land up with this autoimmune disease. Next is chronic stress and infection. So अगर हमारा स्ट्रेस ज़्यादा है या फिर वायरल इन्फेक्शन जैसे कि EBV या फिर फ्रीक्वेंट इलनेसेस हो रहे हैं, ओके, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव बना सकता है, डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है. Then are nutrient deficiencies. Vitamin D is the most important. Then comes selenium, iron, zinc. इनकी कमी जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को अनस्टेबल बना सकते हैं. एंड दीज आर वन ऑफ द फ्यू ऑफ द रूट कॉजेस ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. ओके, सो व्हाई थायराइड मेडिसिन अलोन डजंट वर्क? ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो थायरोक्सिन का टैबलेट अगर हम लोग लेते हैं तो ये एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम को एड्रेस नहीं करता है. द ओनली थिंग विच इट डज इज दैट इट कीप्स T3, T4, TSH विद इन द नॉर्मल लिमिट्स. दैट्स इट. इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ या ले रही हूँ फिर भी मुझे इम्प्रूवमेंट कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, और इसका रीज़न ये है कि हमने रूट कॉज को एक्चुअली एड्रेस नहीं किया हुआ है. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच ऑफ एड्रेसिंग हाशीमोटोस थायराइडाइटिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले ओके, यू हैव टू फॉलो वन वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक रूल. अगर आप थायरोक्सिन ले रहे हो तो आप उसे इमीडिएटली स्टॉप मत कर दीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद स्पेशली. ओके, सो मेडिसिन कैन बी विड्रॉन. आई एम नॉट सेइंग दैट वी कैन नॉट विड्रॉ, वी कैन विड्रॉ देम, बट फर्स्ट यू कम ऑन द प्लान, ओके, चेंज, एंड देन you can actually withdraw the medicine. And medicine should be taken on an empty stomach in the morning, and make sure that 30 minutes or 60 minutes before and after don't have anything like coffee or calcium or iron के tablets या फिर some high fiber food. You should avoid that. Okay, so empty stomach पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So continue with the medications. Okay, now let's talk about what we can do in the diet. कुछ सिंपल गाइडलाइन सबसे पहले बताता हूँ एंड देन वी विल गो इनटू द डिटेल. सबसे पहले गो ऑन एन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट. ओके, व्हाट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट? वेरी सिंपल टर्म्स.
मोटा मोटा चीज़ बताऊंगा कि यू शुड हैव गुड प्रोटीन्स, समथिंग लाइक एग्स, स्प्राउट्स, फिश, चिकन एंड ऑल दैट. Okay, you should have colorful vegetables. 5 to 7 colors of vegetables are very very good. You should have good fats, extra virgin olive oil, flaxseed oil, nuts and seeds. These can be good. Less processed, ultra processed foods को बंद कर दीजिए. फ्राइड फूड्स अवॉइड कर दीजिए, शुगरी फूड्स एंड ऑल दैट ये आप अवॉइड कर दीजिए. दीज आर बेसिक गाइडलाइंस. ओके, एंड देर इज वेरी गुड एविडेंस दैट अगर हम लोग न्यूट्रिशन बेस्ड इंटरवेंशंस करेंगे हाशिमोटो थायराइडाइटिस में, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये इंप्रूव हो जाती है. इवन इफ द एंटीबॉडीज डोंट फॉल, अगर एंटीबॉडीज नहीं भी फॉल होते हैं तो भी इंप्रूव हो सकते हैं. ओके, और ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में प्रूव किया गया है कि न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, प्रोबायोटिक्स, ये सब चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करती है इवन इफ द एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज डू नॉट चेंज. नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द डाइट. सबसे पहला जो है डाइट में अगर हमको चेंज करना है, गो ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट, रिमूव द ग्लूटेन. ओके, सो व्हीट, मैदा, ब्रेड, पास्ता, इनको हम लोग अगर रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ये जो क्रॉस रिएक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री जो बोलते हैं, ये एक्चुअली कम हो जाएगा और इससे हमारे इम्यून सिस्टम स्टेबलाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो ग्लूटेन को एक्चुअली अटैक करते हैं और उसका क्रॉस रिएक्शन थायराइड के साथ होता है. दैट इज व्हाट द ऑटो इम्यूनिटी है. तो अगर हम लोग ग्लूटेन को अवॉइड करेंगे तो ये ऑटो इम्यून रिएक्शन जो है, ये ट्रिगर जो है, ये हम लोग निकाल दे रहे हैं. And that is how the immune system will get stabilized. Okay, and this has been very well documented by Dr. Alessio Fasano in 2012, who showed that gluten actually increases intestinal permeability. It causes leaky gut, and that is how it triggers, autoimmune diseases. Okay, और nutrients करके एक journal है 2025 में, there is a review article which showed that non-celiac Hashimoto's, okay, मतलब celiac disease नहीं है, non-celiac Hashimoto's patients में भी अगर हम लोग ने gluten निकाल दिया तो symptoms improve in a significant way. All right, okay. Now, one thing which we have to remember is that gluten ये कोई poison नहीं है. Okay, so it's not that we have to avoid it forever, but you can introduce later on. But Hashimoto's patients में, especially if you have gut issues like bloating, irritable bowel syndrome, anemia, or if you have a family history of autoimmunity, okay, it is very good if you go on a gluten-free diet forever. Okay. Next is dairy. Okay. Now dairy जो है, okay, it can also worsen the symptoms. इसमें जो प्रोटीन रहता है casein, it actually resembles gluten. Gluten के साथ resemble करता है, and that is how it can cause immune cross reactivity. Also, a lot of patients with Hashimoto, they have lactose intolerance, okay, due to a leaky gut. And dairy itself can actually increase mucus production, bloating, sinus issues, acne, eczema, and so on. और स्टडीज बताते हैं कि देयर इज अ हायर प्रेवलेंस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस in patients with autoimmune disease, particularly Hashimoto's. Okay, so it is good to get rid of the dairy part also. Next is the usual suspect, that is sugar. Okay, it's actually a silent immune trigger. Okay, now you have to understand that sugar triggers inflammation. It also spikes insulin. Okay, it will worsen insulin resistance. Okay, it will also feed the gut bacteria, the bad gut bacteria. Okay, and that is how it causes gut dysbiosis, oxidative stress, and so on. And there is enough evidence on this that sugar actually increases inflammatory markers like CRP, interleukin 6, और हमारा शुगर लेवल अगर कॉन्स्टेंटली हायर साइड पे रहेगा तो इट विल वर्सन ऑटोइम्यून एक्टिविटी and even the gut permeability leading to autoimmune diseases. So although sugar doesn't cause Hashimoto's directly, but actually ये आग में तेल डालने का काम जरूर करता है. Okay, so autoimmunity अगर काम करना है तो get rid of the sugars also. Next, what we have to remember is that you have to avoid excessive iodine. Now क्या है कि पहले के ज़माने में आयोडीन डेफिशिएंसी था तो काफ़ी आयोडीन सप्लीमेंटेशन प्रेवलेंट हुआ. तो इंडिया में थायराइड के बूस्टर्स आते हैं, सीवीड, केल्प टैबलेट्स, हाई आयोडीन सप्लीमेंट्स, ये काफ़ी प्रेवलेंट हैं. इफ़ यू आर टेकिंग दैट, दिस कैन एक्चुअली वर्सन द थायराइड प्रॉब्लम. सो गेट रिड ऑफ दोस इफ पॉसिबल. ओके, नाउ एंडोक्राइन रिव्यूज जर्नल जो है 2024 में, it has explained that actually iodine can cause thyroid dysfunction, especially in people with pre-existing thyroid disease. So आपको अगर Hashimoto's है और उसमें आप excess thyroid ले रहे हो, it can actually create problems. Okay, और there is a database called as StatPulse, उसमें भी ये document किया हुआ है. So excessive iodine can actually create problems. So beware of iodine, and iodine can be there in a lot of supplements also. So get rid of them. Next, what supplements can we use? Okay, now supplements play a very crucial role. Although first diet and then supplements, this is very important.
they are not a cure. So पहले dietary modifications करना जरूरी है, और supplement is is going to help you. Okay, now selenium is one of the most studied and one of the best. Okay, और उसका डोज है 100 to 200 माइक्रोग्राम्स, which is 3 to 6 मंथ्स के लिए अगर आप ले रहे हो तो इससे एक्चुअली एंटीबॉडीज लेवल जो है वो कम हो जाते हैं और सिम्टम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है. ओके, ओनली थिंग विच वी हैव टू सी इज दैट लॉन्ग टर्म डोज हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. इंटरमीडिएटली हम लोग ले सकते हैं. 3 to 6 मंथ्स इज अ गुड टाइम. ओके, देयर इज गुड एविडेंस ऑन इट. ओके, 2002 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, ओके, उसमें डॉक्यूमेंट किया गया है कि सेलेनियम सप्लीमेंटेशन से एंटी टीपी और एंटीबॉडी जो है वो एक्चुअली सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं कंपेयर टू द प्लेसिबो ग्रुप. ओके, सो selenium is one of the major things that you should take. There is even more evidence that it's a recent evidence, like थायराइड करके जो जर्नल है 2024 में, उसमें मेटा एनालिसिस ऑफ मल्टीपल randomized controlled trials. Okay, they did a meta-analysis of this and they found that selenium actually lowered anti-TP antibodies. Okay, so this is very important to understand that selenium is one of the most important supplement in thyroid medications, in reversing Hashimoto's. Okay, next is vitamin D. Okay, now this actually improves the immune tolerance. Okay, and vitamin D is there on T receptor cells also. That is why immune regulation के लिए vitamin D is very very important. Typically अगर maintenance dose लेना है, if your vitamin D levels are good, is 1500 to 2000 international units per day is good. But if you have a deficiency, you can take 60,000 units on a week wise for 8 to 12 weeks. And you can also take 6,000 international units on a daily basis. Okay, and once your levels are normal, then you can switch to 1500 to 2000 units on a daily basis. Okay, now there is good evidence on vitamin D. Meta-analysis have shown that and even the randomized control trials have shown that vitamin D supplementation, they actually showed a reduction in thyroid autoantibodies in several trials. Okay, so make sure you keep your vitamin D levels within normal range. Even a 2024 review article has shown that vitamin D has an immunomodulatory role, and it has a potential in lowering the antibodies in hypothyroid patients. Okay, so selenium followed by vitamin D. Next is you can use a combination of myo-inositol plus selenium. Okay, now this is good in early or subclinical hypothyroidism. Okay, now typical functional dose that we can use is somewhere around 600 milligram of myo-inositol plus selenium of 83 micrograms. Okay, we can take it twice daily for about 6 months. So total जो है 1200 milligram का myo-inositol चला जाएगा on a daily basis. Okay, and there has been an article, okay, in 2017 in which there were 168 hypothyroid patients with a TSH of 3 to 6 and they were randomized. So दो groups बनाए, myo-inositol plus selenium and just selenium. Okay, so myo-inositol plus selenium showed improvements greater, okay, in the reduction of TSH and also the antibodies. Okay, so ये combination ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है. Next is iron. Okay, especially if you have low ferritin levels or if you have anemia, then you can actually use iron and it will improve these symptoms like fatigue, weakness, lethargy and all that. Okay, now we have to understand that iron अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 60 to 120 milligram of elemental iron can be useful. Now you should understand why there is iron deficiency is because a lot of patients of Hashimoto's, they can have gut health issues and hypochlorhydria can be also associated with it. So hypochlorhydria रहेगा तो आयरन डेफिशिएंसी होगा. सो हाइपोक्लोरहाइड्रिया को भी अगर हम लोग ट्रीट करेंगे so that can also correct iron deficiency. So iron is the next thing which we can use in Hashimoto's patients. Next is zinc. Okay, now zinc is another important element. Okay, 15 to 30 milligrams per day अगर हम लोग लेते हैं for about 8 to 12 weeks, then this can be good. But we have to be a little bit judicious with this because इसमें copper deficiency होने के chances हो सकते हैं. So 3 to 6 weeks के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं, so that is fine. All right. Next is probiotics. Okay, now probiotics are very good for improving the gut symptoms and also quality of life. Okay, and this can be really very helpful, especially if you have constipation, bloating, IBS-like symptoms. Okay, then you can definitely use probiotics. Okay, I would recommend use it even otherwise. All right, and there has been a double-blind randomized controlled trial in 2025 published in journal called Nutrients. 64 women tracked for 12 weeks, जहाँ पे nutrition education भी दिया और probiotic दिया L plantarum. Okay, and that actually improves the quality of life. Okay, so if you're using probiotics, this can really help, okay,
improve the quality of life even if the antibody levels are not falling down. All right, so probiotics is another thing which can be definitely used. Okay, so in a nutshell, what we can do finally in Hashimoto's. So first thing, stick to the basics. All right, whole foods, anti-inflammatory meals. Okay, make sure you don't stop your thyroid medications. Once you are on a healthy lifestyle, then we can track the TSH, T3, T4 and all that, and then we can reduce it. Okay, remove ultra processed food, fried foods, sleep for 7 to 8 hours, meditate daily, do your workouts regularly, and yes, have targeted approach. Remove the gluten, dairy, sugar, and yes, take the help of supplementation. Okay, 3 to 6 months of supplementation can really help, and you can keep monitoring. Okay, and supplementation may selenium, okay, which is one. Then next is vitamin D. Next is, if you want, you can have combination of myo-inositol plus selenium, especially in subclinical cases of hypothyroidism. And yes, iron, zinc can be also helpful. Even you can add omega-3, which can be, an anti-inflammatory. So in a conclusion, Hashimoto's actually is not just a problem with low thyroid hormone. Okay, it's just the end result. Okay, the core problem, the main problem is immune dysregulation. Okay, and best outcomes हमको तब मिलते हैं जब हम thyroid medications के साथ साथ diet जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है और सप्लीमेंट्स का हम लोग सही कॉम्बिनेशन करके हम लोग जब उसको करते हैं इस्तेमाल, then you get the right approach, and then you can actually tackle this Hashimoto's thyroiditis. There are many more details to talk about Hashimoto's, but yes, this is an overview of the treatment plan for Hashimoto's. And if you are one of them who are suffering from Hashimoto's, taking thyroxine for years together, maybe 5 years, 10 years, 15 years you are taking thyroxine, but you still feel like crap, you don't feel energetic, you are having that weight gain, do evaluate yourself properly. And a lot of times, hypothyroidism, which is cellular hypothyroidism, may not be diagnosed at all, because thyroid hormone के जो levels है, जो normal ranges जो है, are very different from our optimal ranges. What we look for is the optimal range. So normal, जैसे कि TSH levels जो है वो 0.5 to 5 के आसपास का, that is a very wide range, almost 10 times. Okay, whereas for us, any TSH which is more than 2.5 or max 3, then it is hypothyroidism. All right, so how to read a thyroid report, that is also a different ball game altogether. So a lot of patients who think that their T3, T4, TSH are within normal range, they actually do not have it. They actually have hypothyroidism, and that's the reason they struggle from this overweight problem, lethargy, weakness, fatigue, constipation, dry skin, and so on, even hair fall and all that. Okay, so if you're one of them, okay, do start working on your health, following the advice which I've suggested here. If you want a professional help from us, you can just check the description of this video and you can fill up a health sheet. Okay, and then we can connect with you and we can work together. Okay, and yes, if you like this video, do share it with your friends and families. Okay, probably somebody might be struggling, okay, with Hashimoto's thyroiditis in your family. Do share this video with them, it can help them really. Okay, and yes, please subscribe to the channel, because you will not miss the updates with this. So thank you very much for listening. Stay tuned for the next video. Bye bye.